السلام علیکم ناظرین، ایک پردیسی ایک کہانی سے میں ہوں آپ کا میزبان فہیم میاں۔ آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ایک ایسے شخص سے ملوا رہے ہیں جو خود تو امریکہ میں پردیسی نہیں، ان کے والدین پردیسی تھے۔ ایز اے امیگرنٹ امریکہ میں آنے والے پاکستانی فیملی کے اس سپوت نے ایک نام بنایا ہے فائٹ میں اپنا۔ جی ہاں، یہ پہلے پاکستانی امریکن ہیں جو اب تک جو ہے یہاں پہ 3 جو ہیں وہ فائٹس کر چکے ہیں، جن میں 2 میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور 1 میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور وہ اس میں اپنا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم محمد ابوبکر سلطان۔ How are you, brothers? الحمدللہ، good to see you, man. Good to see you. Alhamdulillah. سلطان، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو آپ میں ایک شوق آپ کا ہے فائٹ کا، پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اس فائٹ کو کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کیا کہتا ہے مکس مارشل آرٹ؟ اچھا یہ مکس مارشل آرٹس ہے۔ سو اس میں جو باکسنگ ہے، اس میں ریسلنگ ہے، اس میں کک باکسنگ، جیو جتسو، سارا لائک فائٹنگ آرٹس اس میں ہے۔ سو کمبینیشن ہے، لائک صرف باکسنگ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے مکس مارشل آرٹس۔ مکس مارشل آرٹ۔ تو آپ کو یہ شوق کب پیدا ہوا کہ آپ اس میں جائیں اور اس طریقے سے جو ہیں وہ فائٹس کریں لوگوں سے؟ میں نے جب میں لائک 16 تھا، میں نے وہ ابو کے ساتھ وہ ایک UFC فائٹ دیکھا ہے، اینڈ پھر مزہ آیا دیکھنے میں، پھر سلولی ٹرین کیا میں نے، اب میرا پیشن ہے۔ پہلی فائٹ آپ نے جو ہے وہ کس ایج میں لڑی تھی؟ ہاؤ اولڈ یو واز وین یو ہیڈ اے فرسٹ فائٹ؟ 25 سو میں نے اتنا ٹریننگ کیا، میں نے فلوریڈا گیا، لانگ آئلینڈ، نیو جرسی، کتنا ڈفرینٹ پلیسز ٹرین کیا میں نے۔ پھر اس کے بعد پھر the right gym came, the right manager, and then I got my fight at first fight 25. But before that, وہ تھوڑا سا I had to find the right connection. تو یہ پہلی فائٹ آپ نے نیو یارک میں لڑی تھی یا کسی دوسری ریاست میں؟ پہلے نیو جرسی میں تھا۔ پہلی لڑائی لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ نیو جرسی گئے تھے، تو اس میں آپ کو کامیابی ہوئی؟ ہاں کامیابی۔ Yeah. You lost the fight or you won? No, won the fight. First round knockout. Yeah. تو جب پہلی فائٹ آپ جیتے تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ اچھا ایسے لائک پتہ ہے لائک یوفوریا، euphoric feeling. I had never before in my life I felt that type of feeling, but all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, He gave me that victory. اوکے، تو آپ جب فائٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک لائن اکثر وہ ویڈیو پہ نظر آتی ہے، لائن آف اللہ۔ ہاں یہ میرا نام، یہ آپ کا نام ہے، فائٹنگ کا نیم، فائٹنگ نیم آپ کا جو ہے وہ لائن آف اللہ ہے۔ تو یہ نام آپ کو کس نے دیا اور کیا سوچا آپ نے کہ یہ نام رکھا جائے لائن آف اللہ؟ میرے ابو نے دیا، اس نے لائک maybe right before I was fighting he gave me this name. When I was training he saw potential in me and he gave me this name and I stuck with it. کبھی گھر والوں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ بھائی یہ کیوں لڑائی کرنے جا رہے ہو، چوٹ لگ جائے گی، یا خاص طور پہ امی نے کی طرف سے؟ امی نے تھوڑا سا کیا ایسے، بٹ ابو نے وہ اس نے دیکھا میرا شوق، بٹ پھر اس نے کہا تھا کہ پوٹینشیل ہے اس میں۔ کبھی انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے فائٹ کے دوران؟ صرف broke my nose and stitches, that's it. تو جب چوٹ لگی اور گھر آئے تو امی ابو نے کیا کہا کہ اب نہیں لڑائی کرنی یا لڑتے رہو؟ نہیں، وہ اس نے وہ ٹپس دیے بلاک کیسے کرنا ہے، فائٹ کا ٹپس۔ تو کبھی زیادہ انجرڈ نہیں ہوئے آج تک؟ نہیں الحمدللہ، تھوڑا بہت چوٹ لگی؟ ہاں تو broken nose no problem. No problem. 6 weeks is good. 6 weeks, okay, that's fine. سلطان، آپ نے پرائمری اسکول اور جو ہے ہائی اسکول کہاں سے کیا؟ بروکلن میں جان ڈوئی ہائی اسکول، میں نے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا اور یہ صرف کیا۔ اب آگے کیا کچھ آگے مزید کوئی پڑھنے کا ارادہ ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فائٹ ہی آپ کا مستقبل ہے؟ ابھی میں وہ the fight is only your future or you want to go further up? Yeah, میں نے وہ لائک besides high school میں نے گریجویٹ کیا، پتہ ہے لائک اسکول آف ہارڈ ناکس، میں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکول آف ہارڈ ناکس لائک لڑائی سے نا، یہ صرف میرا لائک پیشن ہے، صرف یہ کروں گا میں فائٹنگ، جسٹ فائٹ، اپنا فیوچر اسی میں بلڈ اسی میں۔ اوکے، دوسرا کچھ اور پڑھ کے کوئی دوسری جاب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ ابھی نہیں ہے، صرف سر میں لائک فائٹنگ ہے، لڑائی ہے۔ That's it, man. Make your future
just fighting, you know. Just fight. कोई plan B नहीं है, सिर्फ plan A. Just plan Plan A is just fighting, that's it. Just fun. Okay. सुल्तान, इसमें आपका टारगेट क्या है? आप क्या समझते हैं कि किस हद तक फाइट पे आप आगे जाएंगे जो आपका फ्यूचर बिल्ड हो सके इसमें? अच्छा, मैंने like winning streak पे जाना है, like non-stop wins, just continually win, maybe 5-10 fights straight, and inshallah I'll get into the UFC, which is UFC तो is the biggest in the world promotion for mixed martial arts. So इसमें जाना है, फिर you know world champion बनना है इसमें light heavyweight division में. तो UFC के लिए सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने वो सिर्फ win करना है. How many fights you have to win to get in UFC? My plan from 5 to 10 fights. 5 to 10 fights, then you're gonna submit the application or? नहीं, वो मुझे देखेंगे और वो देखते हैं जो undefeated fighters जो होते हैं, फिर वो scout करते हैं. So inshallah I'll be undefeated, you know, 5-6 fights, फिर inshallah वो call आएगी. फिर उससे कॉल आएगी UFC से. UFC की जो फाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर किधर होती हैं? कौन से? वो इंटरनेशनल है, वो किधर भी हो सकता है. वो चाइना में, रशिया में, लास वेगस में. लास वेगस में. वो नंबर 1 ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, UFC. अच्छा, आपने जो अभी जो 3 फाइट्स, जैसे कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया कि आप 3 फाइट्स जो हैं वो लड़ चुके हैं. जो आप पहली फाइट आपकी हुई थी वो रियासत न्यू जर्सी में था, जो आपने जीती जी. और जो दूसरी फाइट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सेकंड वन पेंसिल्वेनिया में था. पेंसिल्वेनिया में था. Did you lost it or you? No, won. Oh, you won Yeah. the one too. Okay. Yeah. What about the third one? Third one in Atlantic City, Atlantic City, New Jersey. Yeah. So वो आपने जो है वो आपने लॉस्ट की थी. अच्छा, तो जो आपके मुकाबले में जो आपसे फाइट कर रहे थे वो कौन थे? पहली फाइट में कोई गोरा था? और जो थर्ड फाइट, नो वो काला था. वो न्यू जर्सी से एक वो कैंप से आया, अच्छा सा मिलर ब्रदर्स कैंप से आया. सो वो अच्छा था, बट गलती मेरा गलती था, इसलिए कि मेरा स्टाइल जो है वो लाइक किल और बी किल्ड स्टाइल में. I get in your face right away, make it that type of fight, you know. I don't like to win too much on points or anything else. I like to get in your face and make it like aggressive fight. During the fight you get aggressive? Yeah, so when you try to knock somebody out, the risk is always there that you can get knocked out. So that's my style, you know. So I go for the knockout. It gives people a show and it's exciting, you know. You do that. सुल्तान, आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है वो क्या होती है? किस तरीके से आप अपना दिन जो है वो गुजारते हैं? अच्छा, मैं वो daily like 4 hours intense training करता हूँ. So I'll get up. So I follow a specific diet, intermittent fasting. So I only eat within 8 hours, 2,500 calories. But I'll train. So I'll do my 3 hours of mixed martial arts training. So that will be either sparring, pad work, wrestling, boxing, or bag work. But then I'll spend another hour doing weights as well. So throughout the day, I have different times of, it'll go mixed martial arts training first, then I'll eat something, then I'll do weights, like this. अच्छा, अभी जैसे कि आपसे बात में आपने शुरू में बताया कि आपका जो फाइटर नेम है वो लाइन ऑफ अल्लाह है. Yeah. लाइन ऑफ अल्लाह आपका नाम है. क्या आप इस्लाम से कितना करीब हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे? Yeah, मैं नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ 5 times a day. I try my best. And also fasting, I keep all the fasts as well. All the fast? Yeah. तो जब आप फास्टिंग के दौरान जो होते हैं वो आपकी जो हेल्थ होती है वो उससे असरअंदाज नहीं होती, जो आपको कैलोरीज पूरी करनी होती है? नहीं, वो जो रमज़ान होता है फिर लाइक ब्रेक लेता हूँ मैं. लाइक मैं स्केड्यूल को चेंज करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ मैं. एडजस्ट करते हैं. सुल्तान, पाकिस्तानी निज़ात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान, हर शख्स उनसे वाकिफ़ है. इसी तरीके से वो पहले जो थे वो फाइटर थे जिन्होंने फ़ाइट करी और उनसे पाकिस्तान का एक नाम जो है वो रोशन हुआ. आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि आप क्या समझते हैं कि वो कैसे फ़ाइटर हैं? हाँ, वो आमिर खान तो लाइक इतना इज़्ज़त है मैं उसको, आमिर खान को. लाइक आई हैव बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम. You know, he paved the way for Pakistani fighters. You know, he made it. He brought like Pakistan to. He put it on the map with boxing and fighting, and he paved the way for other Pakistani fighters. You know, and I have big respect for him. And also, you know, with that's in boxing, but in mixed martial arts, there's not that many Pakistani fighters. So, you know, inshallah, I will bring Pakistan on the map as well in the sport, in the mixed martial arts, in the UFC. And
you know, do what he did in So boxing. you have a desire to be like get the same name like the Amir Khan has? Yeah. Hopefully, inshallah, you know, just keep winning and do the same, you know. घर में छोटे भाइयों के साथ अक्सर लड़ाई हो ही जाती है और आप वैसे भी एग्रेसिव फाइटर हैं. हाँ. कभी ऐसा हुआ कि छोटे भाई ने काम करने से मना किया हो या आपको किसी बात पे गुस्सा आया और आपने छोटे भाई को वैसे ही मारा हो जैसे आप रिंग में लोगों को शायद एक दो दफ़ा किया. नहीं, मजाक कर रहा. नहीं, ऐसे नहीं. सिर्फ बात करता हूँ उनसे. लाइक मारते नहीं. पक्की बात है. सिर्फ ट्रेन करता हूँ उनको. क्यों नहीं मारते? डर है कि अब्बू मारेंगे आगे से? हाँ, वो तो डर है. आप स्कूल भी गए, कॉलेज भी यहाँ पे गए, हाई स्कूल भी किया. कभी कोई गर्लफ्रेंड रखी है आपने? Have you ever had a girlfriend? Not like anything serious, no. Nothing serious, just focus on Just focus on you. my training, my fighting, that's it, अबू बकर सुल्तान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा. हमारे साथ रहिएगा. बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ. अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली. बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें. बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ. आज ही डोनेट कीजिए. जिंदगी हक है और मौत बरहक. पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फाल है. अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतज़िर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह. आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतजामात हम पे छोड़ दें. वेलकम बैक नाजरीन. आइए अबू बकर सुल्तान से दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं. सुल्तान, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं जो भी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो आपकी तरह से फ़ाइटर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं कि वो भी एक दिन आपकी तरह रिंग में उतरें और किसी को शिकस्त दें, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? So you want to suggest the viewers? Yeah, so like I'd say number one thing is discipline, and discipline and passion. If ये आपका passion है, फिर आपने वो discipline चाहिए आपको. आपने वो train करना है. Even if you don't feel like training, train. Go to the right gyms, be in touch with the right people and train. Constantly train and get a lot of sparring in and stuff like this. And then when you have the right people, right connections, they will give you your fights. You mean like first you have to be on the right path? Yeah. To get that. So you have to have the passion for it, have the discipline to constantly train and train at the right gyms, and then from there with the right team, the right gym, they will give you fights. But you have to have the discipline and the passion. With me, alhamdulillah, like the gym I train at, which is Mutant MMA in Long Island, by Oceanside in Long Island. It's a fantastic gym. It's a great gym, and the coach there, Tango, he took care of me. He brought me in and he took care of me, and he's like he got me connected. He's my manager as well. He got me connected with the right fights and everything. He took care of me, trained me, showed me a lot of things. Also, is my brother. He's another fighter, Naz MMA. He's from Azerbaijan, and he took care of me too. He connected me with Mutant MMA. he's a great help in my life as well. So these two guys, plus my younger brother,
Isa, he always is my main training partner. He's going to be fighting soon, inshallah, in the featherweight division, 145 pounds. So this is my team, plus my dad, my family, all my other brothers and everybody, you know, so you just need the right support system. So तो अब तक कितने पाकिस्तानी ऐसे आपने देखे हैं जो कि आपकी फील्ड से, यानी कि जो आपका जो पेशेंट है वही उनका भी हो? आपने कितने पाकिस्तानी फाइटर देखे हैं इसमें? सिर्फ लाइक इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में वो मे बी one or two. Yeah, one or two. I know one other fighter, is Pakistani fighter as well, but I'm basically. He came after you, or he No, I know, like he's had a fight or two before, and he's trained before, but I know a couple Pakistani fighters here and there, but I feel as if like right now I'm one of the main Pakistani fighters in the game. You know, there's a couple other guys. I train with another Pakistani fighter as well. He's good too, and he's coming up too. But there's only a couple of us in mixed martial arts. Yeah. इमरान साहब, ये बताएं कि आपका बेटा फाइटर है, अखाड़े में उतरता है, लोगों से लड़ता है, मार भी खाता है, मारता भी है। कहते हैं कि जब बच्चे को चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है वो माँ बाप को पहुँचती है। राइट। जब ये कभी ज़ख्मी होके घर आता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? उस वक्त कभी आपने सोचा कि इसको मैं रोक दूं कि अब आज के बाद ये काम ना करे? नहीं, उसका ये है कि ट्रेन और करें, अपनी आर्ट को, अपनी क्राफ्ट को और इम्प्रूव करें, उसे परफेक्ट करें और अपनी वीकनेस से लर्न करें। गेम को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें, कटिंग एज पे रखें। और ये फेंट हार्टेड के लिए ये स्पोर्ट नहीं है, ये टफ़ लोगों के लिए है। यू नो, हर बंदा इसमें नहीं जा सकता, वेरी फ्यू। तो फियर नहीं होना चाहिए चोट लगने का, ना नफसियाती साइकोलॉजिकल फियर होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई कॉल हिम द लायन ऑफ अल्लाह। यू नो फुल तैयारी से जाएं और पैशन से लड़ें और विन करें। आपकी गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी इस तरह का किसी ज़माने में शौक़ रखते रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो आइडल था वो ब्रूस ली था। यू नो, यानी कि व्हेन आई वाज लाइक वेरी यंग, तो मैंने एक कंग फू क्लब ज्वाइन किया, उधर ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर लेटर ऑन पे कराटे, उसमें टाइम लगाया। तो वो भी मेरा बड़ा पैशन, कोई 7 साल अपनी ज़िंदगी। जी हाँ। और फिर उसके बाद जो फिर मैं सॉकर प्लेयर बन गया, तो उसमें मैंने 8-10 साल उसमें लगाए। तो ये जो मार्शल आर्ट्स का पैशन जो था ना, ये ऑलरेडी मेरे में था और मैंने इनके अंदर बच्चों में इसको पास ऑन किया है और इनकी अपनी लाइफ में ये चीज़ें अब मैनिफेस्ट हो रही हैं। बाकी ये कि ये अपनी एनर्जी लेके आए हैं, अपनी डेडिकेशन लेके आए हैं और अब इसे ये प्रोफेशनली ले रहे हैं। मैं तो और फिर और लाइफ की और चीज़ों में बिज़ी हो गया, तो मगर ये जो है इसको अब चाह रहे हैं कि इसको प्रोफेशनल लें और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है ना उसकी तरफ जाएं और मैनी ईयर्स उसको रिटेन भी करें। ये नहीं कि एक दफ़ा ली और फिर छोड़ दिया, बल्कि फॉर मैनी ईयर्स वो टाइटल जो है वो मेंटेन करें। तो इसमें मोहम्मद में और फिर दूसरा बेटा ईसा है, इन दोनों में डेफिनेटली मुझे पैशन नज़र आता है और उनके ग्रेट पोटेंशियल नज़र आता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी पोटेंशियल नज़र आता है। इसी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि दे कैन डू द जॉब। यू नो, कोई इसमें हेजिटेंट नहीं है कि कोई चोट लग जाए, कोई ये कोई वो। ये पता ये वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टफ है। एट द सेम टाइम इन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की हुई है और 5 घंटे डेली ट्रेन करना हफ्ते में 6 दिन, दैट टेक्स अ लॉट। यू नो, माइंड का डिसिप्लिन, बॉडी, इमोशन एंड स्पिरिचुअली एज वेल, इमोशनली वेरी बैलेंस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं। यू नो, सो इमरान साहब, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया? ओह, पाकिस्तान छोड़े मुझे कोई 30 साल हो गए। या 30 साल हो या गए। तो अमेरिका आए हुए कितना अर्सा हो गया? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। या अच्छा। तो कभी सोचते हैं कि वापस जाके वहाँ पे जाके दोबारा पाकिस्तान में आबाद हुआ जाए? हाँ, लेटर ऑन है, क्योंकि बहुत दुनिया देखी। इससे अमेरिका आने से पहले स्कॉटलैंड में थे, वहाँ पे 5 साल गुजारे, फिर सऊदीया में टाइम गुजारा। तो कॉन्स्टेंटली लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से वो ट्रैवलिंग और ओवरसीज़ जो है ना वो ठहरे हुए हैं। तो लेटर ऑन जब यू नो रिटायरमेंट के बाद परहैप्स मेरा है मूड पाकिस्तान में टाइम गुजारने का। लेटर ऑन मोर सॉर्ट ऑफ अब चूँकि मैं वो रिलीजियस स्टडीज़ भी करता हूँ, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी करता हूँ, फ़िलासफ़ी
اسٹڈی کرتا ہوں, کمپیریٹیو اکنامک سسٹم اسٹڈی کرتا ہوں. تو میں یہ چاہوں لیٹر آن جی ذرا بچے اسٹیبلش ہو جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, تو پھر مجھے بریک ملے گی, اور پھر میں جو میرا پیشن ہے وہ اسپرچویلٹی اینڈ فلاسفی, ان چیزوں کو میں آگے پرسو کروں گا. عمران صاحب, بچے آپ کے پانچوں جو ہیں وہ ان کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, اگر آپ کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں پاکستان چلے جاؤں اور بچے آپ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا, تو کیا آپ اکیلے چلے جائیں گے یا ان کے ساتھ رہنے کو؟ نہیں, آنا جانا لگا رہے گا, یہ تو آف کورس ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ امریکہ ہی ان کے لیے یہی کچھ دیکھا ہی دیتا ہے, یہیں کے وہ یہ لوکل ہیں. مگر انہوں نے پاکستان ٹریول کیا ہوا دیکھا ہے. میں تو مور سارٹ ویری فلیکسیبل ہوں نا, کہ میں پاکستان میں بھی رہ سکتا, دنیا میں کہیں ڈالیں گے میں رہ لوں گا. اور پاکستان سے پھر میں نے بچپن بھی گزارا, تو میرا تھوڑا لگاؤ ہے پاکستان کے ساتھ. تو ان کا یہ اپنا یہاں پہ رہیں, اور جب انہوں نے وزٹ کرنا ہو پاکستان وزٹ کریں. میں بھی امریکن سٹیزن ہوں, اور جب ادھر آنا چاہوں آ سکتا ہوں اینی ٹائم. 30 years a long time, another 5 years or so یہیں پہ ہوں گا میں. اس کے بعد میں بھی اچھا پاکستان کے حالات اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ وائی ناٹ. پاکستان بھی اچھی جگہ ہے رہنے کی. میں تو اسلام آباد میں ہماری بڑی اچھی لائف تھی, بڑی میموریز ہیں پاکستان کی. اور انشاءاللہ اب یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے, اور اسلام کا نام بھی روشن کریں گے. یہ سارے ان میں سے کوئی اسموک نہیں کرتا, کبھی انہوں نے الکوہول ٹچ نہیں کی, کبھی کسی قسم کا کوئی ڈرگ نہیں ٹچ کیا ہے, اور حلال کھاتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں, اور کبھی گینگ بینگ نہیں کی. یہ تو اور بچوں کے لیے بھی, میں جو پاکستانی یہاں پہ ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ وہ فوکسڈ رہیں اپنے گول پہ. نتھنگ از وداؤٹ ہارڈ ورک, ڈیڈیکیشن, ڈسپلن, ریسورسز, فوکس, پرپز ڈریون لائف ہونی چاہیے. تو جیسے یہ اپنا تھوڑا یہ اپنا پروفیشنلی اسٹیبلائز ہوتے ہیں, پھر مجھے مور سارٹ آف ٹائم ملے گا اپنے آپ پہ, اپنے آپ کو فردر جو ہے نا سیلف ایکچولائز کرنے میں. سلطان سے کبھی آپ کی لڑائی ہوئی گھر میں, اور بھائی نے آگے سے مارا ہو کسی بات پہ, یا غصہ کیا ہو کسی بات پہ؟ یا بچپن میں تو سب بھائی لڑتے ہیں, that's a part of life with brothers. But جب میں 15 سال کا ہوا نا, so he was already training. So اس نے کہا 15 سال کے ہوا, so now you can come train too. From that day, he trained me everything. And since then, I follow him in his footsteps, یہ کہتا ہے jump, I jump, that's the bond we have. We're both very close, So you guys go together to gym as well? Yeah. Obviously, he took most of the biceps, but, for 4 or 5 hours a day, we go together, train. He teaches me, shows me, the path to being a fighter, because now he put that passion onto me, so I love it too. So now you have the same passion like he has? Yeah. The only thing is, my father also, told me to have a plan B, so I'm also doing school as well. But my number one passion is fight. Oh. Yeah, I love it. Watching fight, studying fight, training fight, learning from my brother. That's it. Like when he fights, I'm in his corner. So me and 2 other Nas he mentioned, and Tango, the 3 of us were in his corner, and he's gonna go way up. He got me into weightlifting first years ago, and now he's slowly transitioning me into boxing, MMA. Also, he always teaches me, everything with sometimes with religion or something in school. We go to the same school now. Like some of his older teachers, they still remember him, and they're like, "Oh, you're his younger brother." So he teaches me a lot of different things in different aspects. So he'll teach me about boxing, he'll teach me about weightlifting, he'll teach me about watching some interview from some mufti or something like that. So I wish him the best of luck. He's a great brother. آپ کا بیٹا جو ہے وہ اکثر اکھاڑے میں اترتا ہے, لوگوں سے لڑتا ہے, کبھی زخمی ہو کر بھی گھر آتا ہوگا. آپ کو کیسا لگتا ہے جب وہ زخمی ہوتا ہے؟ I'm the most one, I'm scared, but because I can't see any hurt on my kids. مجھے زیادہ ان کا ہرٹ ہونے پہ ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے تسلی دیتے ہیں کہ امی اٹس اوکے, اٹس پارٹ آف گیم. تو لیکن یہ ہے کہ دے اسٹرانگ فرام چائلڈہڈ, ویری اسٹرانگ.
शुरू से ही ये बच्चे जो हैं वो ये रेसलिंग करते थे, तो आई एम स्केर्ड दैट टाइम, बट ही दे रेसल विद फादर एंड चाइल्डहुड, दे ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग, they get hurt but they're very strong, but still I'm scared. कभी आपने कोशिश करी कि इनको इससे रोका जाए कि भाई ये काम ना करो? कभी ऐसी चोट जो आपको देख के ज़्यादा तकलीफ हुई और आपने ये फैसला किया हो कि आज के बाद सुल्तान जो है वो फाइट नहीं लड़ेगा? नहीं, ये वो क्योंकि इनका पैशन जो है फ्रॉम चाइल्डहुड वेरी स्ट्रॉन्ग, तो फिर पैशन के दरमियान जो है ना वो आप रुकावट नहीं, लेकिन ये है कि बचपन में ये था कि वो ज़्यादा स्टडी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती थी, लेकिन जब स्लोली बड़े हुए तो इनका प्रोफेशनल पैशन देखा कि दे टू मच इंटरेस्टेड, और चोट वगैरह का कोई वो क्योंकि वो बचपन से ये स्पेशली दो जो मेरे बड़े बेटे हैं ईसा और मोहम्मद, ये दोनों बचपन से इसमें बहुत ज़्यादा थे, तो अबू बकर का ज़्यादा पैशन था, इसकी फिज़ीक भी ज़्यादा बड़ी थी और शुरू से ये वॉरियर सो ही वाज ग्रोन अप, ही वाज बिगर देन ऑल फैमिली किड्स हिज एज, और फिर ये स्ट्रॉन्ग भी था इसका। अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज वेरी स्पिरिचुअल टू फ्रॉम चाइल्डहुड, तो जब ये स्पिरिचुअल भी था, स्ट्रॉन्ग भी था, ओबीडियंट भी सबसे ज़्यादा था, तो हर चीज़ में ही इज़ द फर्स्ट वन इन होल फैमिली फिनिश होली कुरान फर्स्ट। तो शोहर हैं उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पांचों बच्चे एक दिन फाइटर बनेंगे। आप क्या समझती हैं कि पांचों को ही फाइटर बनना चाहिए या किसी को किसी और जगह भी जाना चाहिए? They all have different qualities. Like that Haroon, he's very intellectual. From childhood, people used to say he is little encyclopedia. You have all kind of any intellectual question, he give you answer. My other son Isa, he's special in IT. He was doing Cisco router before that coronavirus. So, but the thing is, the bigger brother what is doing, they all follow. They all love to party. Yeah, they from childhood they follow big brother. Everything he does, they have to do too. But I let them do everything they want to do, their passion, and on the side, I want they finish their studies. But you don't want to impose anything on their lives, right? No, not at all. Whatever Just then, before 16, मैंने इनकी ट्रेनिंग ऐसी की, इन्हें स्पिरिचुअल भी रखा, इनको इस्लामिक भी रखा, इनको होली कुरान, नमाज, they fasting. Even I was sick. The younger one is 5th year. He's fasting. He's 11-year-old and he's fasting almost is fixed. So he's the one he start. He was 8-year-old. He start fasting in whole family. So their passion is do something like warrior. His father when they were very young, his father used to wrestling and fight and teach them, and the father used to do, and slowly they got it. But Abu Bakr, ये जो था ये बचपन से ही रेसलिंग में मतलब इसका शौक था टू मच। तो जो भी अबू बकर करता है ये even the younger one, if I show his wrestling, Yusuf, 2-year-old, he's doing all the punching and hitting and things. Yeah, that's younger one. I have videos and everybody say, oh my God, because the Abu Bakr, I have all his life's videos. So gradually they all get in, but they all doing studies too. They all doing their passion too. Everybody have their passions and plus उनका एक शौक भी होता है और एक स्टडी तो साथ साथ चल रही होती है, बैकअप प्लान स्टडी होता है always. So I tell them, do what you wanna do, what's your passion,
and we all eventually pray for Abu Bakr to be successful. He did his 10-year very hard work, working out, anything, everything. He's very organized with his fasting, his praying, his working out, and everything is very perfect. And the best thing is he's very obedient to out of All of 5. पांचों में से ना सबसे ज़्यादा obedient भी यही है. He never say no, even he don't like those things. इसने नो कभी नहीं कहा. बचपन से ये ओबे भी करता था, रिस्पेक्ट भी. आज तक he never show anger, he never show disrespect, he never अपनी टाइम पे अपनी नमाज़ पढ़ना, अपना वर्कआउट करना, अपना माइंड बिजनेस करना, किसी से ना हेट ना लव ना वो, मतलब गॉसिप में भी शामिल नहीं होता. अच्छा, आपसे एक सवाल, आप अपने बच्चों की शादी जो है अपनी बहू खुद पसंद करना चाहती हैं या आप उनकी चॉइस पे छोड़ देती हैं कि वो कर लें? नहीं, इनको मैंने ट्रेनिंग 18 साल बहुत ज़्यादा इनको बताया कि व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड. ये कैटेगरी जो होगी ये गुड होगी, लॉन्ग रन आपके काम आएंगी. क्योंकि शादी जो है वो एक टाइम बिंग चीज़ नहीं है. इसका अफेक्ट फॉर लाइफ आपके बच्चों पे, बच्चों के आगे बच्चों पे, फिर पेरेंट्स पे भी. अगर आप उनकी शादी सक्सेसफुल है तो आपके पेरेंट्स भी हैप्पी रहते हैं. तो मतलब इस वक्त ये टाइम है कि आप बच्चों को पुश नहीं कर सकते कि मैं ये लड़की लाइक करती हूँ तो आप शादी कर लें. इस वक्त ये है कि इनको अकल दे दें, इनको अपनी मर्ज़ी से. लेकिन मोस्टली ये है कि पाकिस्तानी जो रिलेशंस होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं. इवन इसमें अप एंड डाउन आते हैं. मतलब लेकिन अपनी कम्युनिटी में रहते हैं. हाँ. मैं सजेस्ट यही हर बच्चे के लिए यही करूँगी. बाकी ये है कि इनमें इतनी सेंस है, इनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग की. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मदर, so even the younger when I'm not doing any hard things with him, so they says, oh you look lucky, तुम अगर हमारी टाइम पे होते तो अम्मी वजन सेम लाइक दैट. मतलब मेरे इनके अबू बकर और ईसा का तो बहुत ही सख्त था. इनका ये था कि ये टाइम पे सोना है. 9 o'clock they get in bed. that time even too much ये इंटरनेट और ये चीज़ें नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे लाइक 2000 में. तो उस वक्त ये बड़े ओबीडियंट, टाइम पे स्कूल, टाइम पे होमवर्क, टाइम पे सोना है. 2 hour आउटसाइड खेलने के, जब टाइम इनसाइड दे राइट वे. दे नेवर Abu Bakr especially, just I look, it's bad time and he jump on his bunk bed. Yeah, he never disobey. He was very helpful. He helpful with all younger brothers too. Like he's best. They all have very good qualities. Like they are something special. Okay, thank you. Isa is very special. He's very good in study. He always got 97%. Nice. He's a computer IT right now doing. He's finishing, and his passion is workout, because whatever big brother, they all have symptoms. He's always there. He supports me in whatever, and I see his passion for the sport, and I support it completely. I showed up to most of his fights. He does an amazing job. I hope he does become the world champion, inshallah. He's like the best brother you can ever ask for. He does everything for me. He takes me to the store, gets me candy. He's a great fighter. You know, I look up to him. I want to be like him most of the times. So I wish him the best of lucks trying to become world champion, and I wish he becomes it too, and I wish Allah with him too. आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात कराई मोहम्मद अबू बकर सुल्तान और उनकी फैमिली से.
اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.